Bismillahirrahmanirrahim. Paragraph number 3. A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? Fighting a lost battle? I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. This might help her walk like a normal person. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile and said, If you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. Please go and see the other patients. We do not have much hope for her. I don't think that she can walk again. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग. शॉक्ड, सदमा हुआ, दुख हुआ. एस्टोनिश्ड, कोलीग, साथी, रफीक. टीममेट और कैन से फेलो. कमेंट, तबसरा, इजहार, रिमार्क. प्रोसेस, अमल, कार्रवाई. प्रोसीजर और कैन से ऑपरेशन. इंश्योर, यकीन दिलाना. एश्योर और कैन से कन्फर्म. मीन वाइल, उसी वक़्त, उसी लम्हे. मीन टाइम. आयरॉनिक, तंजिया, तनकीदी. क्रिटिकल. एंड द लास्ट वर्ड इज रिक्रूट, भर्ती करना. इनलिस्ट. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड. एक साथी नर्स मेरे करीब आई और कहा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग? रहीला तुम क्या कर रही हो? अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, रहीला व्हाट आर यू डूइंग? एक साथी नर्स मेरे करीब आई और कहा, रहीला तुम क्या कर रही हो? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो. आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर. पहले तो मुझे सदमा हुआ. अ कुलीग मेकिंग अ होपलेस कॉमेंट, अपने साथी नर्स का मायूस कुन तबसरा सुनकर. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल. आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर अ कुलीग मेकिंग अ होपलेस कॉमेंट, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो. पहले तो मैं अपने साथी नर्स का मायूस कुन तबसरा सुनकर मुझे सदमा हुआ. देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया. आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, मैं कोशिश कर रही हूं कि उसके जहन पर असरअंदाज हुआ जाए. बाय हर सिस्टर्स वॉइस, उसकी बहन की आवाज के जरिए. देन आई रिप्लाइड, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस. फिर मैंने जवाब दिया कि मैं कोशिश कर रही हूं कि उसकी बहन की आवाज़ से उसके जहन पर असरअंदाज हुआ जाए, यानी उसको एक्टिवेट किया जाए. आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर, मैं ये भी यकीनी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हूँ, दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, कि उसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिश होती रहे. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. मैं ये भी यकीनी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हूँ कि उसके बाजू और टांगों की मुनासिब वर्जिश होती रहे. This might help her, शायद ये उसे मदद दे. Walk like a normal person, एक आम आदमी की तरह चलने में. This might help her walk like a normal person, शायद ही उसे एक आम आदमी की तरह चलने में मदद दे. Meanwhile, a senior doctor on duty, उसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर walked in, अंदर दाखिल हुआ. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in, इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ. He gave me an ironic smile and said, वो मुझ पर तंजिया तौर पर मुस्कुराया और कहा,
if you spend most of your duty hours on one patient, अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज़ा पर सर्व करोगी, we will have to recruit more nurses, तो हमें मज़ीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी to attend the other patients, दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए. He gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. वो मुझ पर तंजिया तौर पर मुस्कुराया और कहा, अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक्त एक मरीज़ा पर ही सर्व करोगी, तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी. प्लीज़ गो, मेहरबानी करके जाइए, एंड सी द अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीज़ों को भी देखिए. प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, मेहरबानी करके जाइए और दूसरे मरीज़ों को भी देखिए. वी डू नॉट हैव मच, हमें ज़्यादा नहीं है क्या चीज़? होप फॉर हर, उसकी सेहत याबी की उम्मीद. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें उसकी सेहत याबी की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं. आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि ये दोबारा कभी चल फिर सकेगी. आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा कभी चल फिर सकेगी. तो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन के बाद अब सिंपल इंग्लिश को पढ़ते हैं. अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क्ड, रहीला व्हाट आर यू डूइंग? फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल? अ फेलो नर्स के लिए हमने कहा कि अ कोलीग नर्स केम टू हर एंड आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग. शी एडवाइज्ड हर दैट शी शुड नॉट स्ट्रगल फॉर अ होपलेस केस. तो यहाँ पर आपने देखा कि एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करके हमने इसकी सिंपल इंग्लिश की है. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. The nurse was pained to hear her disappointing remarks. Comments के लिए remarks का word use किया गया है. Next है, then I replied, I'm trying to make her brain process by her sister's voice. तो आगे से नर्स कहती है कि but she replied that she was trying to make her patient recognize her sister's voice. Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि moreover, she was also doing enough exercise on her arms and legs to make them move properly. Next है, this might help her walk like a normal person. तो सिंपल इंग्लिश है कि those exercises might help her to walk like a normal healthy person. Next one is कि meanwhile a senior doctor on duty walked in. Meanwhile के लिए हमने कहा कि in the meantime a senior doctor came in. He gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. He looked at her with a sarcastic smile. तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसने देखा, and said that she must not waste so much time on a single patient. Otherwise, they would have to employ more nurses to look after the other patients. Please go and see the other patients. तो सिंपल इंग्लिश बड़ी आसान है कि he advised to leave her and look after the other patients. We do not have much hope for her. I don't think she can ever walk again. तो सिंपल इंग्लिश है कि he further said that she was a hopeless case. He did not think that she would ever walk again. So dear students, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी इख्तिताम को पहुँचता है.